first tool I want to talk about is the most misunderstood tool, language. लैंग्वेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन लैंग्वेज सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड है, राइट? सो आई वांट टू आस्क यू अ क्वेश्चन. I don't know how many of you have really thought about this. Give yourself some time to think about the answer. What is the language that you think in? आप कौन से लैंग्वेज में सोचते हो? Nod if you understood the question, right? आप मीटिंग में बैठे हो, आपके पास कोई आइडिया आया, आप उस आइडिया को अपने दिमाग में सोच रहे हो, रिफाइन कर रहे हो, या फिर आपको कुछ बोलना है, या फिर कोई आर्ग्यूमेंट है, या फिर कुछ भी नया आप सोच रहे हो, तो कौन सी लैंग्वेज में आप सोचते हो? इन योर हेड, व्हाट इज द लैंग्वेज दैट यू थिंक इन? एंड दैट इज ऑल्सो द लैंग्वेज दैट यू ऑटोमेटिकली स्पीक इन मोस्ट आर्टिकुलेटली व्हेन यू आर अंडर स्ट्रेस. जब आप स्ट्रेस में होते हैं ना, तो जब आपको मन से कोई बात किसी को समझानी होती है, ऑटोमेटिकली आप उस लैंग्वेज में बात करते हो. खाली जब हमको प्रेजेंटेशन देनी होती है, हम शायद इंग्लिश में करते हो, लेकिन आप कौन से लैंग्वेज में सोचते हो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड इट्स परफेक्टली ओके. विकी सेइंग इंग्लिश, मदर टंग, कन्नड़ा, हिंदी. It's very important to be aware of this. And I'll tell you why. क्योंकि जब हम जिस लैंग्वेज में सोचते हैं, उसी लैंग्वेज में जब हम बोलते भी हैं, when you're thinking in one language and you also speak in that language, तो हम बहुत अच्छी तरह से अपने आप को समझा सकते हैं. You are able to explain yourself really well because there is no translation happening in your head, right? You know the words, you know everything. So it's very easy to explain yourself in that language because it is a language that you're thinking in. It could be your mother tongue, or it could be a language that you've grown up in. So I'll tell you, I think in English, right? Because when I was growing up, my parents were posted in smaller towns. My father used to work for a PSU. So a convent hota tha, and then there used to be local schools, and my dad was an Indian Oil, and Indian Oil always had a tie-up with the convents of the smaller towns, and I always been in convents. Convents mein kya hota hai, you start thinking in English because there's so much force on, you have to speak in English. Automatically, aap sochna bhi English mein shuru karte ho, which is a good thing or a bad thing, I don't know, but that is how it is. That is how I grew up. So when I speak, I automatically now think in English. If somebody asks me to speak in Hindi, it takes me a pause. Sometimes, it takes me a pause. But it is my mother tongue. Hindi is also my mother tongue, so it's easy. But I still think in English, and it becomes easier for me to speak in English. Sometimes it's a tool. It's a tool for better explaining yourself. So sometimes, if you're in a room, or if you're in front of a client, or if you're in front of your boss, and both of you speak in that language, which could be Hindi, or which could be Kannada, or it could be, any regional language, you don't necessarily have to speak in an acceptable language, which in our country now is English. If you want to really express yourself, it is sometimes okay to lapse into your language that you think in, provided other people in the room understand that language. I'm saying this repeatedly because I am now seeing, as a communication skills trainer, I am seeing that there is a lot of stress on speaking in English. And I understand that because it's an international language. So, understanding, working with teams that are international. And one of the reasons why India has been progressing so much and doing so much is because of our English speaking capability, right? We can interact with international teams. We can sell product internationally. We can work seamlessly across countries. It is a huge benefit, right? But, most of us lapse into this. But even when you're giving a presentation apni company mein, it's okay to do like a little mix of English and the language that you think in. It's important to do that because it just helps you to explain yourself better. Right. I have clients, जब मैं ये presentation skills workshops करती हूँ banks वगैरह में, तो lot of people say, but how मैं presentation दे रही हूँ या दे रहा हूँ and I can't suddenly start speaking in Hindi, and I'm like, but it's acceptable. In a local setting, it's perfectly acceptable. You don't have to feel judged because you don't know English. A lot of people have this thing in their heads that I'm feeling judged because I don't know English so well. Perfectly okay. I don't think it matters at all anymore. What matters is your knowledge. And what matters is how well you're able to express yourself. Why it is important, why I brought this up was that everything is about communicating yourself well.
particularly clients को, particularly teams को, दूसरी टीम्स को, when you're giving a presentation, आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आप समझाने की कोशिश कर रहे हो, but if you're struggling with the language, the outcome will not be there. आपको बजट चाहिए किसी चीज के लिए और आप एक्सप्लेन करने की कोशिश करो कि ये बजट बहुत इंपॉर्टेंट है इस टीम के लिए, बिकॉज हमें ये न्यू सर्विस चाहिए या ये न्यू प्रोडक्ट चाहिए या ये न्यू सॉफ्टवेयर चाहिए, लेकिन you're not being able to convince your teams because you're lacking that language that is very, very not so good, right? So it's okay to switch as long as you're able to explain yourself. I don't want you to feel judged. The worst thing is to prevent yourself from communicating what you want to communicate because you're feeling judged. I'll tell you a little story at this point. I have lots of stories, so I'll tell you a story just to help you understand this. I was 13 years old when I was selected for my first debate. मेरी जो हाउस वार्डन थी स्कूल में दिल्ली में, वो मेरी इंग्लिश टीचर भी थी और उन्होंने कहा कि ये अच्छा बोलती है, कॉन्वेंट एजुकेशन, ये अच्छा बोलती है, सो आई विल सिलेक्ट हर फॉर एन इंटर हाउस डिबेट. शी सिलेक्टेड मी, शी ट्रेन्ड मी. I still remember मेरा टॉपिक क्या था. मेरा टॉपिक था it's better to be a jack of all trades than a master of none. हाँ, मैंने कुछ सुनील गावस्कर का एग्जाम्पल भी दिया था. एनीवे, तो हमने वो 3 मिनट का डिबेट लिखा, फिर मैंने बहुत प्रैक्टिस किया उसे एंड मिसेस गोस्वामी और मैंने उसको बिल्कुल परफेक्ट किया. तो मैं रोज आफ्टर स्कूल आवर्स आई यूज्ड टू स्टे मिसेस गोस्वामी के साथ और हम लोग वो प्रैक्टिस करते थे एंड वेरी गुड, आई हैड बिकम वेरी वेरी गुड एट इट. सो मिसेस गोस्वामी ने कहा कि आप अब ना एक ट्रायल रन करते हैं. सो वील कॉल द क्लास, वील कॉल द एंटायर क्लास और ऑडिटोरियम में जहां एक्चुअल डिबेट होगा वहां पे एक प्रैक्टिस रन करते हैं. तो उन्होंने पूरी क्लास को बुलाया, 50 बच्चे, क्योंकि मेरे स्कूल में बहुत बच्चे थे. आई एम फ्रॉम डीपीएस आरकेपुरम इन दिल्ली, व्हिच इज अ वेरी लार्ज स्कूल. सो शी कॉल्ड ऑल द 50 किड्स इन द ऑडिटोरियम एंड शी आस्क्ड मी टू गो अप ऑन स्टेज एंड स्पीक. कि दीपिका तो विल क्रैक इट. दीपिका तो कोलैप्स्ड. आई कुडंट. इन स्पाइट ऑफ ऑल द प्रैक्टिस मुझसे नहीं हुआ. क्यों? एंड मिसेस गोस्वामी ने मुझे बताया क्योंकि यू वर फीलिंग जज्ड. आपको लग रहा था कि ये मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ये 50 लोग मुझे जानते हैं, एंड नाउ इन स्पाइट ऑफ प्रैक्टिसिंग रियली हार्ड यू आर फीलिंग वेरी वेरी जज्ड. एंड दैट इज व्हाट हैपेंस व्हेन वी आर गिविंग अ प्रेजेंटेशन और वी स्पीकिंग टू पीपल. हम अपने आप को ना दूसरे की नजर से देखने की कोशिश करते हैं एंड वी जज आवरसेल्व्स बिफोर दे हैव जज्ड अस, राइट? सो which is why we feel we need to speak in a certain language and we need to look and talk in a certain way. ऐसा नहीं है. गोल क्या है? आपको जो एक्सप्लेन करना है, एक्सप्रेस करना है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? सो always don't bother too much about the language, bother about getting your point across.